Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello students, welcome to Ghatna Sutra. This is part 4 of chapter 5. We shall continue from where we left. So, capitulation of Sindh. The first Anglo-Afghan War 1839 to 42. Year याद रखेंगे 1839 to 42. Fought on the soil of Sindh was never liked by Amirs of Sindh. Neither did they like the presence of British troops in this region. However, under the treaty, they were asked to pay for all this, which they did. They were not rewarded or thanked for their services, but were charged with hostilities and disaffection against the British government. The Amirs were charged with treasonable activities against the British, and Ellenborough placed in a precarious position due to Afghan war reserves. Excuse me. Saint Osterman sent Outram to Sindh to negotiate a new treaty. Under this treaty, the Amirs were required to cede important provinces as the prince of their past transgression to supply fuel to a company's steamer plying on the Indus and to stop minting coins. Furthermore, in the succession dispute, the English intervened through Napier and started a war when the Amirs rose to in revolt. The whole of Sindh capitulated within a short time, and the Amirs were made captive and banished from Sindh. In 1843, under the Governor General Ellenborough, Sindh was merged into British Empire and Charles Napier was appointed the first governor. Right. And 1843, Sindh was merged into the British Empire. Right? Okay. Criticism of the conquest of Sindh. Historians generally condemn the acquisition of Sindh by the British in the strong words. The cause of annexation were deliberately manufactured. Like many episodes in the British conquest of India, the Afghan war is also a tale of bullying tactics and deceit. However, in the instance of first Afghan war, the English suffered terrible at the hand of the Afghan with the corresponding loss of prestige. To compensate for this, they annexed Sindh, which prompted Elphinstone to comment, "Coming from Afghanistan, it put one in mind of a bully who has been knocked in the street and went home to beat his wife in revenge." Now, we shall come to conquest of Punjab. Consolidation of Punjab under 6. After the murder, अब देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है स्टेट पीएससी का और यूपीएससी का भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, आफ्टर द मर्डर ऑफ लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह, a section of Sikhs under the leadership of Banda Bahadur revolted against the Mughal during the rule of Bahadur Shah. 1715 में Banda Bahadur was defeated by Farooq Shiar put to death in 1716. The Sikh polity once again became leaderless and later got divided into two groups. कौन से? बंदाई यानी कि लिबरल्स और तख्त खालसा मतलब कि ऑर्थोडॉक्स. This rift among the followers ended in 1721 under the influence of भाई मियां सिंह. ओके, लेटर ये याद रखेंगे. अब दो कौन से ग्रुप्स थे, बदाई और तख्त खालसा. लेटर इन 1784 कपूर सिंह फैजलपुरिया organized the Sikh under Dal Khalsa. Kapoor Singh Fazlpuria organized Sikh under the Dal Khalsa, with the objective of uniting followers of Sikhism politically, culturally and economically. The whole body of Khalsa was formed into two sections, Buddha Dal and the Army of the Veterans and Taruna Dal. ठीक है, Taruna Dal और Buddha Dal. The Taruna Dal was the army of the youngs. The weakness of the Mughals and invasion of the Ahmad Shah Abdali created a general confusion and anarchy in Punjab. These political conditions helped the organized Dal Khalsa to consolidate further. Sikh consolidated in Misl मैं बता चुका हूँ 12 मिसलें थी, which were military brotherhood with a democratic setup. Misl is an Arabic word which means equal or alike. Another meaning of misl is state. During the period 1760 through 1773, many Miss started to rule Punjab region under six chieftains
from Saharanpur in the east to Attock in the west. ठीक है, from the mountainous region of the north to Multan in the south. Okay. सुखर चकिया मिल्स एंड रंजीत सिंह, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, ये PYQ है बिहार PSC का. रंजीत सिंह किस मिसल से थे? PYQ है ये. ओके, राइट. At the time of the birth of Ranjit Singh, there were 12 important misls. कौन सी थी? अहलूवालिया, बंगी, दलेवालिया, फिर फैजलपुरिया, कन्हैया, करोरा सिंघिया, करोर सिंघिया, नकई, निशानिया, पुलकलिया, रामगढ़िया, सुखरचकिया. ये इतनी सारी मिसलें थी, ये 12 टोटल मिसलें थी. और इनमें से एंड सईद. ठीक है. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिसल वाज बेस्ड ऑन गुरुमठ संघ, which was essentially a political, social and economic system. ये गुरुमठ संघ. ठीक. रंजीत सिंह was the son of महान सिंह, the leader of सुखर चकिया मिसल. तो रंजीत सिंह किस मिसल से हुए? सुखर चकिया मिसल से. आप याद रखिए, BPSC क्वेश्चन. Mahan Singh died when Ranjit Singh was only 12 years old, but Ranjit Singh showed an early acumen at the political affairs. Towards the close of 18th century, all the important misls except Sukhar Chakriya were in the state of disintegration. Afghanistan was also engulfed in the civil war due to the power struggle which went on for the next 3 decades. These events in the neighboring regions were fully exploited by Ranjit Singh, who followed a ruthless policy of blood and iron and carved out himself a kingdom of central Punjab. In 1799, Ranjit Singh was appointed the governor of Lahore. 1799 as the governor of Lahore by Zaman Shah, the ruler of Afghanistan. 1805 में रंजीत सिंह acquired Jammu and Amritsar and thus the political capital Lahore and religious capital Amritsar. ये कौन ने बनाया था? देखो, religious capital Amritsar और political Lahore किसने रखा है? रंजीत सिंह ने अपना political capital Lahore रखा है, religious capital Amritsar रखा है. The Punjab came under the rule of Ranjit Singh. He also maintained a good relation with the Dogras and Nepalis and enlisted them in his armies. Ranjit Singh and the English. The prospect of the joint Franco-Russian invasion of India through the land route had alarmed English. In 1807, Lord Minto sent Charles Metcalfe at Lahore. Ranjit Singh offered to accept Metcalfe's proposal of an offensive and defensive alliance on the condition that England would remain neutral in case of Sikh-Afghan war and would consider Ranjit Singh the sovereign of entire Punjab, including the Malwa, Cis-Satluj territory. However, the negotiation failed in the changed political scenario in which the Napoleonic danger receded and the English became more assertive. Ranjit Singh agreed to sign the Treaty of Amritsar with the company. Treaty of Amritsar क्या है? ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. ये ट्रीटीज आपको अच्छे से याद रखनी है. ट्रीटीज में कौन था पार्टी और क्या हुआ था ट्रीटी में, राइट? ये आप याद रखेंगे. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज सिग्निफिकेंट फॉर its immediate as well as political effect. It checked on the most cherished ambition of Ranjit Singh to extend his rule over the entire Sikh nations by accepting the river Satluj as a boundary line for his dominions and company. Now, अब कौन सी रिवर यहाँ गई? रिवर सतलुज को बनाया गया था बाउंड्री लाइन. ठीक है. Now he directed his energy toward the west and captured Multan and Kashmir and Peshawar. 1838 में Ranjit Singh was compelled to political compulsion to sign the Tripartite Treaty with the English. However, he refused to give passage to the British Army through territories to attack Dost Muhammad, Afghan Amir. The relation of Raja Ranjit Singh with the company from 1809 to 1839 clearly indicate the former's weak position. Although he was conscious of his weak position, he took no step to organize a coalition of other princes or maintain a balance of power. Ranjit Singh died in 1839 and with his death the progress of decline of the empire began. Punjab after Ranjit Singh. Beginning of the court faction. Ranjit Singh's only legitimate son and successor Kharak Singh was not efficient and during a brief period of his reign court factions became active. Kharak Singh's sudden death in 1839 and the accidental death of his son Prince Naunihal Singh when he was returning from his father's funeral led to an anarchic situation in Punjab. Plans and counter plans of various groups to capture the throne of Lahore provided an opportunity for decisive action by the English. The army, the pillar of the Sikh state, was far less strong than appeared to be. Ranjit Singh's able general Mukham Chand, Diwan Chand, Hari Singh, Naval and Ram Dayal were already dead. Already discontent was growing among the troops as a result of irregularities in the payment. The appointment of the unworthy officer led to the indiscipline. The Lahore government, continuing the policy of friendship with the English company, permitted the British troops to pass
through this territory, once when they were fleeing from Afghanistan, and again when they were marching back from Afghanistan to avenge their defeat. This marches resulted in commotion and economic dislocation in Punjab. Rani Jindal and Dalip Singh. After the death of Nihal Singh, Sher Singh, another son of Ranjit Singh, succeeded, but he was murdered in late 1843. Soon afterward, Dalip Singh, a minor son of Ranjit Singh, was proclaimed the Maharaja, with Rani Jindal as regent, and Hira Singh Dogra as Wazir. Hira Singh himself fell in victim to a court intrigue and was murdered in 1844. The new Wazir Jawahar Singh, the brother of Rani Jindal, soon incurred the displeasure of the army and was deposed and put to death in 1845. Lal Singh, a lover of Rani Jindal, won over the army to his side and became the Wazir in the same year, and Teja Singh was appointed the commander of the force. अभी ये सब पूरा बैकग्राउंड मैंने बता दिया क्या हो रहा था सिख किंगडम में, कौन क्या कब कैसे बना. हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार, उससे रिलेटेड ट्रीटीज और कौन था ट्रीटी में, बस. ठीक है, तो हम वो अब मेजर पार्ट शुरू करेंगे. राइट. सो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 causes. कहते, the outbreak of first Anglo-Sikh war has been attributed to the action of Sikh army crossing the river Satluj on December 1845. This was seen as an aggressive maneuver that provided English with the justification to declare war. The causes were, however, much more complex and may be listed as follows: the anarchy in the Lahore kingdom following the death of Maharaja Ranjit Singh, resulting in the power struggle and for domination between the courts at Lahore and even powerful and increasing local army. Suspicious among the Sikh army arising from the English military campaign to achieve the annexation of Gwalior and Sindh in 1841 and a campaign in Afghanistan in 1842. The increase, देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये रीजन है ना, क्योंकि ये यूपीएससी कई बार या फिर स्टेट पीएससी भी लाइन से पूछ लेते हैं कि मेजर रीजन कौन सा था इसमें से वॉर बिटवीन एंग्लो एंड सिख. ठीक है. द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स बीइंग स्टेशन नियर बॉर्डर विद द लाहौर किंगडम. कोर्स ऑफ वॉर के साथ द वॉर बिगेन इन December 1845 with 20,000 से 30,000 troops in the British side, with the Sikhs had 50,000 men under the overall command of Lal Singh. But the treachery of Lal Singh and Teja Singh caused 5 successive defeats of Sikh at Mudki, Firozshah, Bundelwala, Aliwal and Sabragaon. ठीक है, इतनी जगह पे इनकी डिफीट हुई, बेसिकली डिफीट हुई. फेल टू द ब्रिटिश फोर्सेस विदाउट अ फाइट. बहुत सारी लाहौर बैटल टू द ब्रिटिश फोर्सेस विदाउट अ फाइट. तो किसने ट्रेचरी करी थी? हारे क्यों? हारने का रीजन था ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह. ये कमांडर्स थे उस टाइम पे. फिर उसके बाद हारने के बाद ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. ओके. द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर फोर्स्ड द सिख टू साइन एन ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इन March 1846. And the main feature of the treaty at Lahore was as far as follows: war indemnity of more than 1 crore rupees to be given to Jalandhar Doab. The Jalandhar Doab between Bias and Satluj was annexed to the company's dominion. A British resident was to be established at Lahore under Henry Lawrence. The strength of the Sikh army was reduced. Dalip Singh was recognized as the ruler under Rani Jindal as regent and Lal Singh as Wazir. Okay. Since the Sikhs were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir including Jammu was sold to Gulab Singh. Okay. ये previous year question है, वो आप करेंगे. And he was required to pay 75 lakhs to the company as the prince. The transfer of Kashmir to the Gulab Singh was formalized by a separate treaty. Okay, Treaty of Bhairowal, है ना? Treaty of Bhairowal. The Sikhs were not satisfied with the Treaty of Lahore over the issue of Kashmir, so they rebelled. In 1846, December 1846, the Treaty of Bhairowal was signed. 1846 में, according to the provision of this treaty, Rani Jindal was removed as a regent and Council of Regency for Punjab was set up. The council consisted of 8 Sikh Sardar presided over by the English resident Henry Lawrence. Okay, Henry Lawrence थे यहाँ पे. अब ये याद रखिए, क्यों याद रखिए? क्योंकि है ना, कई बार पूछ लेता है किस ट्रीटी या किस वॉर से कौन से ब्रिटिश कमांडर वगैरह एसोसिएटेड थे. हेनरी लॉरेंस, आपको ये याद रखना है. ठीक है, हेनरी लॉरेंस यहां से थे, आगे चल के और भी चीजें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर पे आया हुआ है. ऑफकोर्स ये यहाँ पे डला हुआ है, वहां पे होना चाहिए था. एंग्लो मैसूर वॉर पे आया हुआ है. हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से हमको पता है कॉर्नवालिस एसोसिएटेड थे. यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है 2013 का. तो आप देख लीजिए, मैं क्यों बोलता हूं आपको वॉर वगैरह अच्छे से याद रखना है. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कौन रहा है एसोसिएटेड उस ट्रीटी से, जैसे हेनरी लॉरेंस यहां से रहे हुए हैं. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा रहा है ट्रीटी से एसोसिएटेड.
तो आपको आगे चल के ये ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एसोसिएट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। कितना मेजर वॉर है, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब वॉर्स और इनसे रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ के अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है। देखिए ये ट्रीटी ऑफ सगाउली टुक प्लेस इन विच ईयर। ट्रीटी ऑफ सगाउली पढ़ा हुआ है हमने कि नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है 1815। ये उत्तराखंड पीएससी में आया हुआ है 2016 में। देखिए आपको हर स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, वो मतलब इस चैप्टर से हर स्टेट पीएससी ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मेजर एरियाज में आपको वैसे भी हाईलाइट करवा चुका हूँ, ये भी मैंने करवा था ट्रीटी ऑफ सगोली। आप याद रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप टाइम पीरियड याद रखिए। मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है, आप समझ लीजिए, वॉर याद रखना है, उससे रिलेटेड ट्रीटी याद रखनी है, ठीक है। उस ट्रीटी में एसोसिएटेड इंग्लिश जनरल याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड ब्रॉड आपको याद रहेगा ना, तो आपको क्रोनोलॉजी बनाने में आसानी होगी, ठीक है। ये है बेसिक। इंग्लिश जनरल कौन था, ठीक है, जनरल या लीडर कौन था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ। कॉज क्या था, द डिफीट ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड बैरोवाल वर हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिख्स। इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेंट इट आउट टू रानी जिंदल, who was sent to Benares as a pensioner, added to the resentment of the Sikh. Mulraj, the governor of Multan, was replaced by a new Sikh governor over the issue of increase of annual revenue. Mulraj revolted and murdered 2 English officers accompanying the new governor. Sher Singh was sent to suppress the revolt, but he himself joined Mulraj, leading to a mass uprising at Multan. This could be considered as an immediate cause of the war. The then गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहाउजी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहाउजी। कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता रखना होना चाहिए। हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट गॉट द प्रोटेक्ट ऑफ टू एनेक्स पंजाब कंप्लीटली। अब इनको ऑफ कोर्स रिवॉल्ट हुआ तो इनको बहाना मिल गया कि अब में तो हम पंजाब पूरा ही ले लेंगे। कोर्स ऑफ वॉर क्या था, लॉर्ड डलहाउजी हिमसेल्फ प्रोसीडेड टू पंजाब। 3 important battles were fought between the final annexation before the final annexation of Punjab. These 3 battles were Battle of Ramnagar, led by Sir Hugo, the commander in chief of the company. Battle of Chillanwala, ठीक है, और Battle of Gujarat. ये 3 major battles थे. The Sikh army surrendered at Rawalpindi and their Afghan allies were chased out of India. गुजरात इज अ स्मॉल टाउन इन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। अब यहाँ पे गुजरात मतलब पूरा गुजरात नहीं, ठीक है, गुजरात मतलब कि जो स्मॉल टाउन था वहां पे उस टाइम पे गुजरात पूरा एक स्टेट नहीं था। रिजल्ट एट द एंड ऑफ द वॉर केम सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एंड फॉर हिज सर्विसेज द अर्ल ऑफ डलहाउजी was given the thanks of the British Parliament and promotion in the peerage as Marquis. Setting up of a 3-member board to govern Punjab, comprising Lawrence brothers, Henry and John, and Charles Mansell. ठीक है, Earl of Dalhousie का टाइटल दिया गया, मतलब Earl of Dalhousie was given the thanks of the British Parliament ने इनको थैंक्स बोला था, ठीक है। सरेंडर ऑफ सिख आर्मी तो हो ही गया था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब यहाँ पे कंप्लीट हुआ सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो सिख वॉर क्या हुआ, द एंग्लो सिख वॉर गिव द 2 sides a mutual respect for thus fighting powers. The Sikh were to fight loyally on the British side in the revolt of 1857 and in many other campaigns war up till the Indian independence in 1947. ठीक है। Extension of British paramountcy through administrative policy. The process of imperial expansion and consolidation of British paramountcy was carried on the company during 1757 से 1857 तक period through a two-fold method. Policy of annexation by conquest or war. 2 पॉलिसी इन्हें फॉलो करी थी, बेसिकली एनेक्सेशन करने का, कॉन्क्वेस्ट और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। यही सब जो सेकंड वाली बी वाला पार्ट वही माउंट कर रहा है कि भाई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडली रिंग फेंस पॉलिसी वगैरह जो थी, वेलिस्ली की सब्सिडियरी अलायंस थी वगैरह, उनकी बात कर रहा है बी में। We have already discussed how the company defeated and subjugated one by one the major Indian power like Bengal, Mysore, Marathas and Sikh, mainly by waging wars against them and through considerable deceit. But in the case of many of the other powers, the British applied diplomatic and administrative policy. In this context, we may cite example of Warren Hastings ring fence policy, Wellesley system of subsidiary alliance, Dalhousie doctrine of lapse. ये देख लीजिए, यहीं पूछ लिया गया है, ये मैं आपको चलो अभी बता दे रहा हूं। ये इतना पार्ट UPPCS 2013, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये PYQ है,
PYQ है, यही PYQ है सीधा। मैच द कॉलिंग में आया था PYQ, मैच द कॉलिंग में आया था, मैच द कॉलिंग में आया था, ठीक है, मैच द कॉलिंग फॉलोइंग, सॉरी मैच द फॉलोइंग में आया था, कॉलम बने हुए थे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में यही पूछा गया, यही है, बिल्कुल सीधा यही है कि वॉरेन हेस्टिंग की रिंग फेंस, मतलब ऑफ कोर्स लिखा हुआ था, एक तरफ पूरे लिखे हुए थे, एक तरफ दूसरे लिखे हुए थे, राइट। टू सी हाउ ब्रिटिश डोमेन एक्सपेंडेड नहीं था। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, अब रिंग फेंस पॉलिसी समझते हैं। वॉरेन हेस्टिंग टुक चार्ज एज द गवर्नर जनरल एट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल व्हेन द ब्रिटिश वर, और हाँ ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया, सॉरी यूपीएससी में भी पूछा गया है ये चीज, ओके राइट। Policy of ring fence, Warren Hastings took charge as the Governor General at the critical period of British rule when the British were to encounter a powerful combination of Maratha, Mysore, and Hyderabad. He followed a policy of ring fence which aimed at creating buffer zones to defend the company's frontier. Broadly speaking, it was a policy of defense of a neighbor's frontier for safeguarding their own territories. यहीं पे ये है definition. Broadly speaking, it was a policy of defense of their neighbor's frontier for safeguarding their own territory. ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट द मराठास एंड मैसूर। द चीफ डेंजर ऑफ द कंपनी टेरिटरी वाज फ्रॉम अफगान इन्वेडर्स एंड मराठा। द सेफगार्ड अगेंस्ट दीज डेंजर्स द कंपनी ओवरटुक टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर ऑफ द अवध। यहाँ पे फ्रंटियर कौन यूज किया गया है डिफेंस के लिए? अवध, राइट। ऑन द कंडीशन दैट नवाब वुड डिफरे the expenses of defending army. The defense of Awadh constituted the defense of Bengal during that time. Thus the state brought under the ring fence system were assured of military assistance. क्या देते थे? military assistance देते against the external aggression, but at their own expenses. ये याद रखेंगे आप, ठीक है। at their own expenses है ये स्टेटमेंट, अगर कोई यूपीएससी को पूछ लेता है कि एक्सपेंसेस इंग्लिश गवर्नमेंट देती थी क्या? नहीं, वो नहीं देती। मिलिट्री असिस्टेंस देंगे एक्सटर्नल एग्रेशन से, बट आपको पैसा देना पड़े। इन अदर वर्ड्स, दीज अलाइज वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सब्सिडरी फोर्सेज व्हिच वर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इक्विप्ड एंड कमांडेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इन टर्न वर टू बी पेड बाय द रूलर्स ऑफ द स्टेट। वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रिंग फेंस पॉलिसी। ये देख लीजिए, ये स्टेटमेंट एक बार यूपीएससी में डायरेक्ट ही पूछा गया, यही स्टेटमेंट था, है ना, शायद यही स्टेटमेंट था, कहीं तो पूछा गया है, ये मेजर स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी व्हिच sought to be reduce the Indian state into a position of dependency on the British government, right? Okay. अब पढ़ते हैं सब्सिडरी अलायंस, राइट। सब्सिडरी अलायंस बहुत मेजर है, ये भी पूछा गया है। सब्सिडरी अलायंस रेगुलर पूछा जाता है। सब्सिडरी अलायंस मतलब ये पूछेंगे पहले, सब्सिडरी अलायंस के अंदर लाइन से क्रोनोलॉजी पूछी गई है पहले, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए कि अरेंज करिए कि सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले कौन सा स्टेट आया और सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट आया। ये बहुत स्टार मार्क कर लेंगे आप, इसको दो डबल स्टार करेंगे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ भी है यहाँ पे, PYQ है, ठीक है, PYQ है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली का था, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 से 1805 में, टू बिल्ड एन एम्पायर इंडिया अंडर द सिस्टम। द allying Indian states rulers were compelled to accept the permanent stationing of the British forces. क्या करते थे? परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज विद इन द टेरिटरी एंड टू पे सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। सब्सिडी अलायंस में क्या करते थे कि आपके यहाँ पे आपकी जो भी स्टेट है उसके अंदर हम अपनी ब्रिटिश फोर्सेस भेज देंगे, वो आपकी डिफेंड करेंगी, बट आपको पैसा देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। इंडियन रूलर्स हैड टू एग्री टू द पोस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट इन दिस कोर्ट। ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा एक कोर्ट में। द इंडियन रूलर्स कुड नॉट एम्प्लॉय एन यूरोपियन not employ an European in his service without the prior consultation of the company. Nor could he go for war or negotiate with any other Indian rulers without the consulting of the Governor General. ये सारे provisions थे. In return for this, the British would defend the rulers from his enemies and adopt the policy of non-interference in the internal matters of the allied state. Right? ये इतने पूरे provisions थे, ये आप provisions याद रखेंगे. One of the objectives behind Wellesley's strengthening of the subsidiary alliance system was to keep the French from reviving and expanding their influence in India. Around this time, the fear of Napoleon's expedition towards the east was very real for the British, who felt that the French could attack the western coast of India from their colony of Mauritius. Hence the clause in the alliance treaty, the Indian rulers to dismiss. Hence the clause in the alliance treaty, the Indian rulers to dismiss Europeans other than the British from their service and not employ any. यही इसलिए क्लॉज था ये कि कोई और ना आ जाए. By means of the system, the company could station its forces at a strategic location and keep the French at the bay. Besides, the subsidiary alliance would expand the company's hold over the Indian states and gradually bring more and more territory into the company's fold. The Indian rulers lost their independence by buying security. Thus, they were not free to interfere with the British resident. They lost much of their revenue paying for the British troops. Also, the alliance was made the Indian rulers weak and irresponsible. The subjects were exploited, and it was practically impossible to depose oppressive rule as they were protected by the British.
Evolution in perfection. It was probably Dupleix who first gave on hire, so to say, European troops to Indian rulers to fight their wars. Since then, almost all the governor generals from Clive onwards applied the system of various Indian states and brought it near perfection. The first Indian state to fall into its protection trap, which anticipated the subsidiary alliance system, was Awadh. फर्स्ट इंडियन स्टेट जो आया सब्सिडी अलायंस के अंदर वो था अवध, which came in 1765, signed a treaty under the company pledge to defend the frontier of the Awadh on the condition of the Nawab defraying the expenses of such defenses. It was in 1787 that the company first insisted that the subsidiary state should not have the foreign relation. ठीक है, बाद में ये बोला गया कि सबसिडी स्टेट को फॉरेन रिलेशन भी नहीं बनाना है. दिस वॉज इंक्लूडेड इन द ट्रीटी विद द नवाब ऑफ कार्नेटिक विच कॉर्नवालिस साइन इन 1787 में आए कॉर्नवालिस और उन्होंने कार्नेटिक को भी ले लिया. It was Wellesley's genius to make a general rule to negotiate with the surrender of the treaty in full sovereignty for the maintenance of subsidiary forces. Stages of application of subsidiary alliance. There were 4 stages of evolution of the subsidiary alliance system. In the first stage क्या होता था, company offered to help a friendly Indian state with देखिए पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज अच्छे से एक बार पढ़ते हैं. इन द फर्स्ट स्टेज द कंपनी ऑफर टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इट्स ट्रूप्स टू फाइट एनी वॉर द स्टेट माइट बी एंगेज्ड इन. सेकंड में क्या होता है, कंसिस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉमन कॉज फॉर विद द इंडियन स्टेट now made friendly and taking the field with its own soldiers and those of the state. Now came the third stage when the Indian ally were asked not for men but for money. ठीक है. In return, the company promised that it would recruit, train and maintain the fixed number of soldiers under British officers and that the contingent would be available to the rulers for their personal protection as also for keeping out aggressors. In the fourth or the last step, the money or the protection fee was fixed and money and the protection fee was fixed, usually at a high level. When the state failed to pay the money in the time, it was asked to cede certain part of the territory to the company in the lieu of payment. The company's entry into the affairs of the state had begun. Now it would be for the British residents installed in the state capital under the treaty to initiate, sustain and hasten the process of eventual annexation. Last में जाके इनको annex ही करना था basically, right? Okay. State which accepted alliance. कौन से स्टेट थे? The Indian princes who accepted the subsidy system were निज़ाम of हैदराबाद, ठीक है, 1798 से 1800 तक निज़ाम रूल ऑफ मैसूर. ये पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई ये है ना, क्रोनोलॉजी पूछी गई है इसमें. वेट, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी पूछी गई. इसी ये क्रोनोलॉजी को PYQ में पूछा गया है. PYQ क्या का है? UPSC का PYQ है और काय का है? MPPSC में पूछा गया है. MPPSC में पूछा गया है क्रोनोलॉजी के फॉर्म में. ओके, क्या पूछा गया है? क्रोनोलॉजी. ओके, सो ये हम उसमें ही पढ़ लेंगे समरी में, ठीक है. समरी में ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, मतलब लाइन से दिया हुआ है. निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798 से 1800 में. ओके, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, भोसले राजा ऑफ बेरार 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बुंदी एंड रूलर्स ऑफ भरतपुर 1818. द होलकर्स वर द लास्ट मराठा कन्फेडरेसी टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस इन 1818. Okay, so moving forward, doctrine of lapse, again very important. Doctrine of lapse, in simple terms, the doctrine stated that the adopted son could be the heir to his foster father's private property but not state. ये आपको समझ में आ रहा है किसके लिए बोला जा रहा है? झांसी के लिए, बेसिकली झांसी के लिए. Adopted son could be the heir to his foster father's private property but could not the state. It was for the paramount power, the British, to decide whether to bestow the state on the adopted sons or annex it. The doctrine was stated to be based on Hindu law and Indian customs, but Hindu law seemed to be somewhat inconclusive on this point, and the instance of an Indian sovereign annexing the state of his vassal on account of lapse, ठीक है, that is leaving no issue as high, were rather rare. Maharaja Ranjit Singh had annexed a few of its feudatory principalities on account of lapse. मतलब ब्रिटिशर्स ने किया था, पहले महाराजा रंजीत सिंह ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टाइप की कोई पॉलिसी यूज कर चुके थे. Likewise, the company 1820 acquired a few petty cis Satluj states on the absence of heir. Nonetheless, there was no clear
cut instances of an adopted son being deprived of the entire state of or of such a state being regarded as lapse. Okay. Though this policy is attributed to Lord Dalhousie in 1848-1856, he was not its originator. It was a coincidence that during the Governor Generalship, several important cases arose in which doctrine could be applied. Dalhousie showed too much zeal in enforcing this policy, which had been theoretically enunciated on some previous occasions. Okay. His predecessors has acted on the general principle of avoiding annexation. If it could be avoided, Dalhousie in turn acted on the general principle of annexing if it could so be legitimately. Okay. अब हम पढ़ेंगे annexation of Awadh. Awadh was the oldest of the surviving state brought under the subsidiary alliance, and the cruel impact of the system resulted in its continuous maladministration under forfeit and extravagant nawabs for long spell of 8 years. Maladministration एक one of the major reason था ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी दिखा भी देंगे आपको. द पीपल सफर्ड फ्रॉम द हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द नवाब एज ऑल्सो द इलीगल एक्सट्रैक्शन बाय हिज ऑफिशियल्स एंड तालुकदार. The chronic bankruptcy of the treasury was partly due to the heavy charges raised by the British government for the maintenance of the subsidiary troops. In addition, large contributions were realized by Lord Hastings, Lord Amherst, and Lord William Bentinck for purpose entirely unconnected with an affairs of the Awadh. 1819 में Nawab was given the title and the status of king. So Nawab was given the title and status of king. Lord Dalhousie directed Selman, the resident of Awadh, to make a tour throughout the state and ascertain the actual situation by personal inspection. The resident submitted a report describing an anarchic condition in the state. He was succeeded as resident in 1854 by Outram, who submitted a report supporting that of his predecessors. Dalhousie hesitated to take the extreme step, that is annexation. He preferred permanent British administration, with the Nawab retaining his title and rank, but the Court of Director ordered annexation. Abolition of the throne in 1856. Wajid Ali Shah refused to sign the treaty, giving away his rights, and was exiled to Calcutta. It was a political blunder for which the British had to pay heavy price during the revolt of 1857. यहाँ से शुरू हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857. यहाँ की जो बार बहुत सारी पॉलिसी ऐसी थी ब्रिटिशर्स की जो बहुत ज़्यादा फ्यूरिएट कर देती हैं लोकल रूलर्स को, राइट. ओके, अब ये देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, 3 बार. Awadh was annexed by the British Empire in India by a policy of subsidiary alliance, doctrine of lapse, by declaring state as maladministered, और by waging war. क्या पढ़ा है यहाँ पे, अभी क्या बोला मैंने, ये देखिए maladministration हाईलाइटेड है ना, maladministration. इसका आंसर सी है, maladministration, राइट. नाउ the ruler of which one of the following state was removed by the power of in the pretext of misgovernance, maladministration. कौन? अवध. अगेन यूपीएससी का 2007 का क्वेश्चन है. अब देखिए जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. आप पढ़ते जाइए, ट्रस्ट करिए, आपको मेजर जो क्वेश्चंस के एरिया है वो बता दिए जाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड, राइट. आगे बढ़ते हैं. ओके, annexed lapse state. It was a matter of chance that during Lord House's term, many rulers died without a male issue, and 7 states were annexed under doctrine of lapse. 7 states were annexed under doctrine of lapse. The most important of these were Satara. जैसे मैंने पिछली बार बताया, क्रोनोलॉजी पूछ लेते, क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जो हम वहाँ पे भी पढ़ देंगे बाद में आगे चल के समरी में. फिर झांसी आया, नागपुर आया 1854 में. अदर स्मॉल स्टेट्स इंक्लूडेड जातिपुर बुंदेलखंड में, जैतपुर बुंदेलखंड में, संबलपुर उड़ीसा में, भगत इन हिमाचल प्रदेश. लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध इन 1856. अवध को 1856 में आफ्टर डिपोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस, जो कि PYQ है. अगेन मैं बता दे रहा हूँ PYQ है. ओके, यहाँ पे भी आपको लिख देता हूँ, ये PYQ है. PYQ UPSC और UPPCS. ओके, नाउ thus Dalhousie annexed 8 states during his 8-year tenure as a Governor General. In these 8 years, he annexed some 250,000 square miles of the territory of India. His reign almost completed the process of expansion of British power in India, which began with the victory of Siraj-ud-Dowla at Plassey in 1757. Okay, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. After this, we shall continue in the next video. Stay connected. Thank you.